Well, in breaking news that's coming our way, according to the latest reports coming in, law enforcement agencies in Bangladesh have arrested 9 more people in connection with vandalism and arson attacks on the offices of Prothom Olo and the Daily Star. Remember, the attacks came hours after Chief Advisor Muhammad Yunus confirmed the death of student leader Sharif Osman Hadi. My colleague Rainik Datta is joining us at this point in time from the Bangladesh High Commission. Aditya Vadwan also joining us at this point in time. Let me go across to Aditya. Aditya, we're getting information at this point in time with regards to the arrests that have taken place following the attacks that took place at Prothom Olo at the Daily Star, which are two reputable newspapers. Well, absolutely, Sabri, to see these arrests at the Prothom Olo, which is the biggest, the Bangladesh newspaper. The arrests have been done, considering the fact that the law and order problem situation in Bangladesh is persisting, and clearly, this is really the situation in Bangladesh is concerning at the moment, and definitely, I'm just outside the Bangladesh High Commission in New Delhi, and completely, if you can see, the security situation is currently beefed up outside the Bangladesh High Commission in New Delhi. So indeed, there are, we saw this morning how the VHP, the activists from the Vishwa Hindu Parishad were, trying to, protest and, come towards the Bangladesh High Commission in New Delhi. And how at this juncture, these arrests that have been made at the Prothom Olo, one of the oldest newspaper of Bangladesh, is reflective of the fact how the law and order situation has gone to the worst. And from here on, it needs to be seen how things unfold in this scenario. Sabri. Absolutely. My colleague Rainik Datta is also with us from the Bangladesh High Commission in Kolkata. Rainik, जानकारी दीजिए हमको अभी क्या स्थिति है, वहाँ से अपडेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास? देखिए, सुबह से ही कोलकाता में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उनके सामने प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था और अभी भी प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने ये जो पूरा रास्ता है, ये रास्ता पुलिस की तरफ से अभी बंद करके रखा गया है। पूरा बैरिकेडिंग दिया गया है। पुलिस का हायर ऑफिशियल्स इधर मौजूद है। भारी पुलिस बल को इधर तैनात किया गया है। और दूसरी तरफ अभी भी लगातार जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। शाम हो चुका है मगर अभी भी प्रोटेस्ट जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। सुबह जैसे हिंदू परिषद का तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था और अभी जो आम जनता के तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर मौजूद है, स्टूडेंट्स की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट आप लोग जो कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट के पीछे कारण क्या है, किस वजह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? আমরা আজকে কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাস সেই দিকে আমরা একটি মিছিল করে এলাম এবং এখন ডেপুটেশন দিতে যাওয়া হয়েছে। মূল বক্তব্য এটাই যে বাংলাদেশে যেভাবে অরাজকতার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ইন্টারিম সরকারের হাত ধরে, ইউনুসের নেতৃত্বে যে সরকার, সেই সরকারের সময়কালে যেভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমরা পথে নেমেছি। देखिए, इनके तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में फिलहाल जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके राज में जिस तरीके का हालात है, जिस तरीके का सिचुएशन तैयार है, उसी के प्रतिवाद में ये लोगों का प्रोटेस्ट है। आज आप लोगों का ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है प्रोटेस्ट के पीछे? इस प्रोटेस्ट के पीछे कारण है कि इस देश में और बांग्लादेश में हम दो तरफ के फैसिवाद और फंडामेंटलिज्म देख रहे हैं। इस देश में हम हिंदुत्व फैसिवाद को देख रहे हैं और उस देश में, बांग्लादेश में, हम इस्लामिक फैसिवाद का राइज देख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम देख रहे हैं कि मजदूर, किसान, वो किसी भी माइनॉरिटी रिलीजन के होना, वो मारे जा रहे हैं। बेकसूर लोग, बेकसूर इंसान जो सिर्फ अपना जिंदगी मेहनत करके गुजारना चाहते हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है। तो इन दोनों शक्तियों के खिलाफ जो अल्टीमेटली बाहर के जो साम्राज्यवादी है उनका ताबेदारी करते हैं, उनके खिलाफ
और ये दोनों फैसीबाद के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। भी देख ही सकते हैं कि कोलकाता में अभी भी प्रोटेस्ट जारी है और ये प्रोटेस्ट को देखते हुए कोलकाता में एकदम हाई कमीशन के सामने वाला रास्ते को पूरा बंद करके रखा गया है। हाई सिक्योरिटी दिया गया है, हाई पुलिस ऑफिसर भी इधर मौजूद है, कॉम्बैट फोर्स को भी इधर मौजूद रखा गया है क्योंकि कुछ समय पहले ही जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि अभी भी रास्ते में वैसा पोस्टर पड़ा हुआ है जो कि जो बीएचपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के साथ हाथापाई भी हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा बीएचपी सपोर्टर्स को हटाने के लिए। जो हिंदू परिषद के लोग हैं उनके साथ पुलिस का हाथापाई भी हुआ जिसमें पुलिस की तरफ से बहुत सारे लोगों को डिटेन भी किया गया है और ये सिचुएशन के बाद ही एकदम हाई कमीशन के बाहर का जो रास्ता है ये रास्ते को पूरा सिक्योर किया गया है। कोलकाता पुलिस का हायर ऑफिशियल्स इधर मौजूद है, कोलकाता पुलिस की तरफ से पूरा रास्ते को बैरिकेडिंग किया गया है, कोलकाता पुलिस का भारी पुलिस बल को इधर तैनात किया गया है। उसके साथ साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स, कॉम्बैट फोर्स जैसे फोर्सेस को भी इधर मौजूद रखा गया है कि किसी भी तरीके का परिस्थिति ना खराब हो क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश में है, बांग्लादेश का जो दीपू चंद्र दास का हत्या के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश का घटना का प्रतिवाद कोलकाता में हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश का जो हाई कमिश्नर ऑफिस है उसके ठीक सामने ही पुलिस की तरफ से पूरा तैनात किया गया है। रैनिक, मैं आपके पास आऊंगी हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री हैज समन्ड द इंडियन एनवॉय ओवर सिक्योरिटी ऑफ बांग्लादेश mission. This move comes after a group of protesters held demonstrations recently outside the two Bangladeshi missions in New Delhi and West Bengal's Siliguri. My colleague Aditya Vadwan is with us on the broadcast. He's joining us live from the Bangladesh High Commission in the national capital. Aditya, help us understand the details that we're tracking at this point in time with regards to the Indian envoy who's been summoned. Well, absolutely, Asabi. The Indian envoy has been summoned by the Bangladeshi Foreign Ministry over security concerns, and definitely, recently, sometime back, we saw how the Ministry of External Affairs had also summoned the, Bangladeshi High Commissioner to India, considering the security situation of the minorities in Bangladesh. So at this juncture, it can be seen as a tit-for-tat diplomatic move by the Bangladeshi Foreign Ministry because only some days, only a week has passed, when MEA summoned the Bangladesh High Commissioner to India. So, at this juncture, the back-to-back events, which are happening, the killing of this Das, this Hindu Das in Bangladesh has, sparked out anger amongst all the Hindus across India, and definitely, we saw how the Vishwa Hindu Parishad activists and the Bajrang Dal activists were also, protested just meters away from the place exactly where we are standing right now. They were still, you can see the Delhi police barricades are still there outside the Bangladesh High Commission, and nobody's allowed, to go beyond this, barricades that have been put up by the Delhi police. So, at this juncture, okay, all right, Aditya, stay on with us. We have some more breaking news coming in. Bangladesh's Foreign Ministry has confirmed summoning Indian High Commissioner Pranay Verma amid concerns over the security of Bangladeshi mission in India. The Foreign Ministry in a statement has said that Verma was conveyed Dhaka's grave concern over the regrettable incident outside the premiere of the Bangladesh High Commission and residents in New Delhi on December 20th. And it says, and I quote, act of vandalism at its visa center in Siliguri on December 22nd by different extremist elements. My colleague Renik Datta with us on the broadcast to give us more of this. Renik, give us the details as far as Bangladesh Foreign Ministry confirming the summoning of Indian High Commissioner Pranay Verma is concerned. एकदम देखिए बांग्लादेश हाई कमीशन के तरफ से ये जो हाई कमीशन को बुलाया गया है क्योंकि बांग्लादेश में जो परिस्थिति फिलहाल है उसी परिस्थिति में बांग्लादेश का बहुत सारा वीसा सेंटर को बंद किया गया है और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो भारत में भी दिल्ली में जो वीसा सेंटर है उनको भी रद्द रखा गया है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के ऊपर ध्यान रखते हुए ये मीटिंग के लिए बुलाया गया है बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा ये जो सिचुएशन कितना देर तक ये सब चलेगा,
इतना ये सिचुएशन कब तक ऐसा रहेगा और कब तक ये सिचुएशन को डेवलप किया जाए, रिस्टोर किया जाए, इसके ऊपर ही चर्चा करने के लिए ये मीटिंग बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में हादी का मौत के बाद ही जिस तरीके का प्रोटेस्ट भड़का था, जिस तरीके का अनरेस्ट सिचुएशन अभी फिलहाल बांग्लादेश में है, उसी सिचुएशन के आधार पर और उनका जो इम्पैक्ट भारत में पड़ते हुए नजर आ रहा है। भारत में भी लगातार जिस तरीके का प्रोटेस्ट हाई कमीशन के बाहर हो रहा है, वही सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए मीटिंग बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे संग। More breaking news coming in. The statement that the Foreign Ministry has issued after summoning of Indian Envoy has stated that the government of Bangladesh has called upon the government of India and asked to conduct a thorough investigation into the incidents and take all necessary measures to prevent the recurrence of such acts. The statement further said that they have asked Indian government to ensure safety and security of Bangladesh's diplomatic mission and related facilities in India. My colleague Renik Datta continues to be with us on the broadcast. Renik, details दीजिए हमको। information हमारे पास अभी आ रही है कि बोला गया है कि thorough investigation करनी चाहिए, इस पे क्या बता सकते हैं? एकदम ही देखिए, जिस तरीके का घटना घटा है उसी को देखते हुए ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जो है वो दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश का जो परिस्थिति फिलहाल है उसी सिचुएशन में अभी ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये जो अनरेस्ट सिचुएशन तैयार हुआ है उसके बाद ही इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग किया गया था और हाई लेवल मीटिंग होने के बाद ही एक SIT तैयार किया गया था बांग्लादेश की तरफ से। और ये पूरा घटना का जांच भी अभी बांग्लादेश का 2 डिपार्टमेंट यानी SIT, बांग्लादेश पुलिस का जो SIT तैयार है और उसके साथ रैपिड एक्शन बैटालियन इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो फिलहाल यह पूरा घटना का थरोली इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ऐसा ही ऑर्डर के मुताबिक बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये इन्वेस्टिगेशन में कोई चूक ना हो, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। All right, stay on with us. We in fact have some more news that's coming our way with regards to the developments that have been taking place in Bangladesh. Well, the Hazrat Shahjaal International Airport in Dhaka has been closed off for visitors apart from passengers ahead of the arrival of Tarique Rahman. The Dhaka Tribune has said in a report. In fact, Rahman is the son of former Bangladesh Prime Minister Khalida Zia and is expected to return to the country on December 25th. My colleague Aditya Vadhavan continues to be with us on the broadcast. Aditya, of course, many have been questioning the arrival of Khalida Zia's son, who's now expected to arrive. We're now understanding that the Dhaka airport is closed off, barring for those people who are now passengers who will be, of course, arriving. But help us understand this angularity that comes with Tarique Rahman now stepping in. Well, absolutely, indeed, if you see, as election time in Bangladesh is coming more closer, at this juncture, because now singularly the Bangladesh National Party is expected to win the Bangladeshi elections, which are due for next year. Definitely, all these protests that are happening, signify to the fact that there is some involvement of the Bangladesh National Party, because since the time being, the head of the Bangladesh National Party, Khalida Zia, has been anti-India. Definitely, her approach, her statements, if you see, in the past, if you see her statements, reflected that her anti-India situation. And clearly, since now the Awami League, there have been complete ban on the activities of Awami League in Bangladesh, and many of the political leaders of Awami League are either under house arrest or they have, disappeared somewhere. So indeed, at this juncture, all these, considering the angularity of Khalida Zia's son's visit to Dhaka, all these reflects the fact that there is something going on within the Bangladesh National Party and the interim government of Bangladesh, led by Mohammad Yunus. So indeed, Bangladesh is in a very much chaos at this juncture, and definitely now Bangladesh has become a puppet in the hands of Pakistan and China, because China is also now heavily investing in some of the projects in Bangladesh. So at this juncture, the situation is concerning, and already Bangladesh is in a very huge debt. The economy is in shambles. So from here on, it needs to be seen how things unfold till
the time a democratic government is elected in Bangladesh. All right. Stay on with us. We have some more news coming in some more trouble for former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina. The International Crimes Tribunal in Bangladesh has framed charges against ousted Prime Minister Sheikh Hasina and 16 other over enforced disappearances during her rule, as reported by the Daily Star. The development comes weeks after she was sentenced to death by the tribunal after being found guilty of crimes against humanity involving student protesters in the country from July last year. Aditya continues to be with us on the broadcast. Aditya, more trouble mounting for ousted Prime Minister Sheikh Hasina. What more can you tell us? Well, definitely, there has been a mounting troubles for the former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Moments after moments, we have been seeing such, things are happening against, there's been a complete ban on the activities of Awami League. And, going forward, there could be more trouble for Awami League because, sometime back we saw how the ICT of the Bangladesh had, had passed a criminal order for giving capital punishment to Sheikh Hasina. So since absolutely, since then, Renik and Aditya, thank you so much for sharing all those details, joining us.